नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार इज़ द न्यू फ्यूचर। और हम लोग यहाँ पे सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए यह देखने की कोशिश करेंगे क्या असलियत में इलेक्ट्रिक कार लेना आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी ईवी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो हमें इसे सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा किसी दूसरी कार से। और इस केस में हम इसे नॉन इलेक्ट्रिक कार से कंपेयर करेंगे। लेट्स एज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक कार इज कैपिटल ए एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार इज कैपिटल बी। In general, electric car is costly than non-electric car. That is, capital B is greater than capital A. Now we have to calculate the running cost of car per kilometer. Running cost of non-electric car assumed to be capital X rupee per kilometer, whereas running cost of electric car is small x rupee per kilometer. For the sake of simplicity and easy calculation, we now call them capital X and small x only. So whenever you see them, it's the running cost of car in terms of rupee per kilometer. Remember that. These are the four basic variables which we'll use in the upcoming calculation. Now let's assume that both car travel has kilometer. Therefore running cost of non-electric car is capital X time has, whereas running cost of electric car is small x time has. Therefore overall cost of non-electric car is capital A plus capital X has, and overall cost of electric car is capital B plus small x has. Here we have two equations and it's time to plot the graph. We plot the graph along the x-axis. Here, x-axis denotes the distance traveled by your car and the y-axis denotes the money you spent on your car. The graph of both the equations are shown here. We can see that electric car has higher starting point because of high initial cost but low slope. Also, we can see that both these lines interact a certain point which denotes the particular distance at which the money you have spent on both the car is equal. Before this electric car is costlier and after this non-electric car. Now we have to calculate this distance. We can calculate this distance by simply equating both the equation. From this, distance has is equal to capital B minus capital A divided by capital X minus small x. Or we can simply say that has is equal to difference in initial cost of both the car divided by difference in running cost of the car. We have done basic calculation. Now it's time to choose our contestant. Yes, here we have Tata Nexon XMA AMT petrol car, and on the other side we have car of same company, that is Nexon XM electric. For first we have to calculate the initial cost, which is the cost of purchase of that car. Tata Nexon EV XM cost about 14.54 lakh ex showroom, whereas Tata Nexon XM AMT cost 9.2 lakh ex showroom. Therefore, difference in cost is equal to 5,34,000. But also, many state gives huge subsidy on electric vehicle. Here we consider 3 lakh as the subsidy amount. Therefore, difference in new cost become 2,34,000. Now here it's done. We move to the next step, that is the running cost. The running cost is equal to the cost to run 1 kilometer of the car. Nexon EV XM में 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी इंस्टॉल है, which is roughly equal to 30 unit. Assuming that per unit cost of electricity is 7 rupee, therefore to fully charge the battery it requires 30 into 7, which is 210 rupee. Also we know that it can go approximately 220 km with full charge. Therefore cost to run 1 km is equal to 210 divided by 220, which is roughly equal to 0.95. Now keep aside this data. वहीं दूसरी तरफ Nexon XMA AMT gives 17.2 kmpl माइलेज, जिसको हम लोग ऑन रोड सिटी ड्राइविंग कंडीशन में एज्यूम करें तो आती है 14 kmpl अप्रॉक्स. Also let's assume that 1 liter petrol cost 105 rupee. Therefore
cost to run 1 kilometer is 105 divided by 14 which is 7.5। यहाँ हमारे पास दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है, और अब हम इनसे निकालेंगे डिफरेंस इन रनिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू XMA माइनस EV रनिंग कॉस्ट, दैट इज 7.5 माइनस 0.95 और 6.55। यानी एक EV ऑप्ट करने पे आप 6.55 रुपये बचा रहे हैं हर किलोमीटर। एट लास्ट हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब हम इससे हैश की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन परचेसिंग कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन रनिंग कॉस्ट। डाटा को पुट करने पे जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 35,725 किलोमीटर। दैट्स अ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, वी हैव टू कीप इन माइंड दिस वैल्यू। अगर सिंपल सेंस में बोले तो आफ्टर 35,725 किलोमीटर आपकी EV प्रॉफिटेबल होगी। बट हाउ लॉन्ग इज दिस? लेट्स चेक इट आउट। Suppose that you are a working person and you have to travel 50 km in working days, 6 days in a week, and 25 km in non-working days like shopping, travel, etc. Suppose that आप टोटल 18 हॉलीडेज लेते हैं जिसको संडे के साथ ऐड करने पे आपके टोटल लीव हो जाएंगे 70। Now with the help of simple calculation, total distance covered in 1 kilometer is 70 into 25 plus 50 into 365 minus 70 is equal to 16,500 किलोमीटर। अगर हम इससे नंबर ऑफ डेज निकालें तो आएगा 35,725 डिवाइड बाय 16,500 किलोमीटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर एंड 2 मंथ। सिंपल वे, आपको 2 साल और 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपकी EV की चॉइस प्रॉफिटेबल होगी। ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमने 50 किलोमीटर लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन को एज्यूम करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे। देख सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि भले ही आपको 3-4 साल इंतजार करना पड़े लेकिन उसके बाद आपकी EV प्रॉफिटेबल साबित होगी। सो फॉर दिस कंडीशन EV इज गुड। नाउ लेट्स एज्यूम अनदर सिचुएशन इन विच वी यूज कार ओकेजनली। या तो आपका वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, या आप ज़्यादा ट्रैवल ही नहीं करते। इन दिस कंडीशन assume that you travel roughly 100 km in a week, therefore 50 to 100 km in a year. If we calculate using previous formula, we find out that you spend 6 years and 10 months, which is approximately 7 years. Now 7 years is a very long time. Also keep in mind you get 8 years of warranty on battery. कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम ही अपने EV को वारंटी पीरियड में चलाने के लिए, उसके बाद आपकी बैटरी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड यू डोंट वांट टू कम इन दिस सिचुएशन। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड वी चूज? आइदर वी चूज EV और नॉन EV। डोंट वरी, हमारे पास सारे रिजल्ट हैं और इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यू शुड प्रेफर EV if you commute daily, that is travel a long distance every day between your home and your place of work, or you have already one car and want to buy another one जिसे आप अपने डेली ट्रैवल में यूज करेंगे। इस कंडीशन में आपके लिए EV फायदेमंद साबित होगा और आपको कुछ साल में ही आपका ये रियल प्रॉफिट देने लगेगी। इन अनदर सिचुएशन यू शुड प्रेफर नॉन EV if you work from home or your workshop is near, also you travel occasionally and you travel very long distance, more than 250 किलोमीटर। इस कंडीशन में आपके लिए नॉन EV ही प्रॉफिटेबल साबित होगा और आपको यही लेनी ही चाहिए। ओके, दैट्स फॉर ऑल नाउ। फिर मिलते हैं। टू नो मोर